वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, है ना। टुडे the discuss about the second physical features of India, named the Northern Plain. Do you know the Northern Plain and the Himalaya, geologically young and the structurally folds? So, जो कल भी हम बोले थे, the two physical features, one the northern plain and second the young fold mountain are recently formed, है ना. The whole mountain system of Himalaya represents a very youthful topography with high peak, deep valley and fast flowing the river, and the northern plain are formed of the alluvial deposits. So these two the features are recently formed by the geological formation and depositional formation. Okay, geological formation and depositional formation. So here the discuss about the northern, the plain separate over the area from the high mountain to lowland area 7 lakhs kilometers. Northern Plain. Interplay the three river basin. Interplay the three river basin. Number one, the Indus Plain, Brahmaputra Plain and Ganga Plain. अब देखोगे कि ये तीन प्लेन जो है एरिया है, तीन रिवर्स, ये थ्री रिवर्स जो है, चाहे वो इंडस की बात करो, ये इंडस आ गया, इधर से इंडस से इधर से आ गया, ब्रह्म इंडस आ गया, ये ब्रह्मपुत्र है और ये आपका गंगा प्लेन. तो ये तीन प्लेन, तो प्लेन का ये डिपोजिशनल फॉर्म है ना, आर एसोसिएटेड विद द डिपोजिशनल वर्क. सो हियर बाय द डिपोजिशनल वर्क, द रिवर्स एजेंट ऑफ, कौन सा एजेंट है, तो एजेंट है द रिवर, रनिंग वाटर, river from the high altitudes, the glacier to work start from high altitudes to low land area, cross the three age structure, young stage, maturity stage and old stage. Work of river, erosional, transportational and depositional. So river carry the breaking of rock, silt and mud upward to downward area, and the low lying area में आपको वो क्या करता है, डिपोजिट कर, इसलिए इसको हम लोग डिपोजिशनल फीचर्स कहते हैं. ठीक है, डिपोजिशनल फीचर्स कहते हैं. अब देखेंगे कि नॉर्दर्न प्लेन have been formed by the interplay of the three river basin, नेमली क्या है, गंगा है, इंडस है और ब्रह्मपुत्र. This plain is formed
ये जो प्लेन है ये मैदानी भाग है। क्योंकि थर्ड स्टेज में आप देखो कि आप लोग को याद होगा कि वर्क ऑफ रिवर में 3 वर्क होता है। इरोजनल होते वर्क हो, डिपोजिट ट्रांसपोर्टेशनल है और डिपोजिशनल है। एज क्या है? यंग स्टेज है, मैच्योरिटी स्टेज है और ओल्ड स्टेज है। ओरिजिन ऑफ रिवर क्या है? द हाई अल्टीट्यूड एंड माउंटेनियस एरिया। The river makes a number of the landform in the different stage and the different work. Generally originated place, it means the high altitudinal, the area, the mountains river, the young stage, and work capacity is very hard. इतना स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी है कि इजिली स्मॉल या वीकर पार्ट्स ऑफ रॉक्स का वो ब्रेक कर देता है और एक नए लैंडफॉर्म को वो फॉर्म करता है, सच एज लाइक ए यूथ स्टेज में। क्योंकि इसलिए कि वेलोसिटी, वाटर की वेलोसिटी है काफी लो है, बट कन्वेक्शनल करेंट काफी हाई है, जिसके कारण हाई अल्टीट्यूडनल एरिया में रिवर मिक्स अ डिफरेंट टाइप। देखोगे चाहे वो कश्मीर वैली है, जस्कर वैली है, कुल्लू वैली है, हाँ, उसके बाद जितने भी आप वैली देख रहे हो वो सारा वैली रिजल्ट है किसका? वो रिजल्ट है यूथ स्टेज का। और जो भी ब्रेक्स हुआ, जो भी रॉक्स ब्रेक हुआ, ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, क्रैकिंग ऑफ रॉक्स को हम लोग क्रैक करते हैं, क्रैकिंग ऑफ रॉक्स उसको हम लोग। तो इरोजन के बाद सेकेंड स्टेज में जब रिवर मैच्योरिटी स्टेज में आ जाता है तो वो स्टेज क्या है तो मैं बता देता हूँ। हिमालय का जब देखते हैं तो हिमालय तो फुटहिल, ये मान लो ये हिमालय है, ये फुटहिल है। फर्स्ट स्टेज यहाँ पर यंग स्टेज में वर्क ऑफ रिवर, वो वर्क ऑफ रिवर का इरोजनल वर्क कर रहा है। फुटहिल टू हरिद्वार, जनरली हरिद्वार ये सेकेंड स्टेज है, सेकेंड स्टेज हरिद्वार है। और हरिद्वार टू द बे ऑफ बंगाल ये आपका थर्ड स्टेज है। थर्ड स्टेज यानी कि ये है ओल्ड स्टेज, ये है मैच्योरिटी स्टेज। और ओल्ड मैच्योरिटी स्टेज में वर्क ऑफ रिवर का है तो इरोजन प्लस ट्रांसपोर्टेशन and only deposition in the low lying area जो interplay by the 3 river system Indus, Ganga and Brahmaputra river. So depositional features at the thick fertile alluvial soil. Not only the main river but also the tributary of the river. So what is the mean tributary? So it means the when the main rivers, अब देखोगे कि जब मेन रिवर है, मान लो सपोज करो कि हमारा मेन रिवर कौन सा है। मेन रिवर चाहे वो गंगा होगा, चाहे वो इंडस होगा या ब्रह्मपुत्र। जब बड़ी नदियां अपने सोर्स है, अपने पाथ पर, ये जो पाथ चल रहा है, चलते भी जा रहे हैं और वो माउथ ऑफ रिवर के पास पहुंचा। रास्ते में इन बोथ साइड
some small rivers are joined, ये ज्वाइन किए. The meeting place of the main small river, ये जो meeting place है ये हुआ 3U3. अब मान लो रिवर क्या है, तो ये गंगा है. गंगा का ट्रिब्यूटरी रिवर कौन हुआ, तो यमुना हुआ, सोन हुआ, घाघरा हुआ, गंडक हुआ, बागमती है, कोशी है. को ये बोथ राइट एंगल एंड लेफ्ट एंगल. और डिस्ट्रीब्यूटरी किसको कहते हैं, जब मेन रिवर से स्मॉल रिवर अपना अलग रास्ता निकालता है, ये डिस्ट्रीब्यूटरी हो गया. तो डिस्ट्रीब्यूटरी कहा, तो माउथ ऑफ रिवर, माउथ ऑफ रिवर. तो हुगली, हुगली is the distribute of the river Ganga. Yamuna, the tributary of the river Ganga, the longest tributary of the river Ganga. The longest parallel चल रहा है दोनों, ड्रेनेज सिस्टम में पढ़ेंगे तब. ये डिपोजिशनल ऑफ एलुवियम इन द वास्ट बेसिन, लेइंग द फुटहिल टू हरि बताए. तो foothill of the Himalaya over the millions of years and form the fertile plain, peony plain, sump plain, flood plain. These are all the features are formed by the running water in the third stage with the help of the work of erosional work, and depositional work in the low-lying area. So it spread over the 7 lakh kilometer, 2,400 kilometer long, and from north to east, from north to mountainous area to Bay of Bengal, northern plain, lowland area, and 2,040 kilometers long and 320 kilometers broad. तो कहीं पर broad है जिसका 3 किलोमीटर है. The plain being about the 2,400 kilometers. Generally आप देखोगे the plain area is most suitable place for all the human activities. Generally the plain area is base of agriculture. The human का जो basic needs है, चाहे वो food हो, cloth हो, and settlement, these are all requirements fulfilled on the bank of the river due to some natural and human factors here affected. On the bank of river area, flat surface area, availability of soil is rich alluvial soil, ideal climatical condition, flat surface land, availability of the water. So all the human activities such as agriculture and industrialization, settlement, construction of roadways, construction of railways, all activity develop in the northern plain. Northern plain is an area that densely populated है. तो जहां पर ये सारा फिजिकल और ह्यूमन फैक्टर्स, ये दोनों इकोनॉमिकल फैक्टर्स एंड
physical factors. Economical and physical factors are responsible for develop all the human activities, and the Dej region area, northern plain region area is densely populated. यही कारण है कि डेंसली पॉपुलेटेड के कारण रीजन एरिया है. Densely populated physiography division with a rich soil cover and combined it with the adequate water supply and favorable climatic conditions. It is so क्या करता है कि ये एरिया जो है, ये रीजन जो है, बेसिकली यहाँ पर एग्रीकल्चरली है. एग्रीकल्चर क्योंकि द प्लेन एरिया इज सुटेबल फॉर कल्टिवेटेड लैंड है, कल्टिवेटेड है. एग्रीकल्चर के लिए जो है वो काफ़ी ए प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द इंडिया. क्योंकि अबाउट द 80% पीपुल आर इंगेज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. तो बेसिकली so the plain area and the pressure of population is very high in comparison the foothill and the mountainous and the valley region area. Why? Because the plain area is more suitable climatical conditions. But the rivers, all the rivers, so the Himalaya river, इसको हम लोग पेरिनियल रिवर कहते हैं. फिजियोग्राफी डिवीजन जब करेंगे तो रिवर दो भाग में बांटते हैं. एक हिमालयन रिवर हो गया, दूसरा रिवर कहते हैं पेनिनसुलर रिवर. तो हिमालयन रिवर इज ऑल्सो नोन एज द पेरिनियल रिवर. पेरिनियल रिवर इज द थ्रू ऑफ द ईयर ड्यू टू द स्मेल्टिंग ऑफ द आइस. द ग्लेशियल रीजन एरिया, चाहे वो इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरी. So the river coming from the northern mountain and involved in the depositional work, the lower course due to the gentle slope. ये जो लोअर कोर्स देखते हो, ये देख लो कि ये लोअर कोर्स है. स्लोप क्या है? तो जेंटल स्लोप है. और जेंटल स्लोप के कारण फुटहिल टू हरिद्वार एंड हरिद्वार तो बे ऑफ बंगाल, gentle slope and the near both sides on the bank of the river, depositional work start with the help of the three river basin. And the northern plain, the vast plain, but you know our northern plain, जो northern plain है, the interplay the three river basin है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस. So northern plain is the broadly divided into the three sections. Western part of the northern plain referred to the Punjab plain formed by the Indus and its tributary. Middle part जो है, the lower part of plain lies in पाकिस्तान चला गया. Indus and its tributary like a झेलम है, चीना है, रावी है, ब्यास है, सतलज है. All the rivers are originate the Himalaya. This section is called the dominated by the dove. It means
fertile land area. Do. Do means up, up means fertile. देखोगे डू नोम दिए हुए हैं. Now second, the Ganga plain. Ganga plain extend between the Ghagra to Tista river. Is separated over the states in the northern Himalaya. You Uttarakhand, UP, Delhi, West Bengal, Bihar, Jharkhand. To its the east and particularly in the Assam lies in the Brahmaputra river. तो ये सी रिवर जो एरिया है, जो इंडस प्लेन से जो है उसका ओरिजिन आपका मानसरोवर लेक एंड ईस्ट ट्रिब्यूटरी तो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड रेस्ट पार्ट ऑफ द पाकिस्तान. तो इसको लोग पंजाब प्लेन के नाम से जानते हैं. वो पंजाब प्लेन जो फॉर्म किया इंडस एंड ईस्ट ट्रिब्यूटरी. गंगा प्लेन का जो एक्सटेंशन है घाघरा टू चिस्ता. द टू देखो, द टू स्ट्रीम, दो धाराएं हैं. एक है अलकनंदा और दूसरा है भागीरथी. अलकनंदा और भागीरथी ये दो नदियां, अलकनंदा और भागीरथी. मीटिंग प्लेस ऑफ द देव प्रयाग, आगे पढ़ेंगे. यहीं से आपका प्लेन का फॉर्मेशन होता है, जो देव प्रयाग से यानी कि हरि की पौड़ी. हमने बताया था कि इसके पहले हिमालय टू फुटहिल, फुटहिल के हरिद्वार, ये फर्स्ट और सेकेंड स्टेज है. थर्ड स्टेज हरि की पौड़ी से लेके बे ऑफ बंगाल, जो घाघरा टू तीस्ता इन ईस्ट ट्रिब्यूटरी, चाहे वो यमुना हो या कोसी हो. So the northern plain are generally described as a flat surface, peneplain, flood plain. ये सारा प्लेन के नाम से हम लोग इसको डिस्क्राइब करते हैं. नॉर्दर्न प्लेन as flat land with the variation it's the relief. It is the particularly the Assam like a Brahmaputra. The vast plain also have the diverse the relief features according to the variation of the relief features. So northern plain can be divided into the four regions. You know the name of the region? The river after the descending from the mountain and deposit the pebbles, the narrow belt to the slope of the Shivalik range. So it is also known as the Bhavar. All the streams disappear in the Bhavar belt. So south of this belt, the stream and the river the re-emerge and create the wet, swampy and marshy region. Is also known as the Tarai. और जहाँ thickly forested region हो गया, full of the wildlife, these forests have been cleared to create the agriculture land and settled. The forests have been the create to
to agriculture land and settled, migrant from the Pakistan after the partition. So the large part of the northern plain is from the older, मैंने पहले ही कहा था कि इंडिया का जो लार्ज पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन का है, these are all depositional landfall. ओल्ड एलुवियल, एलुवियल दो होते हैं, young, new alluvial and old alluvial is known as the Khadar and Bangar. Khadar and Bangar. The Bangar soil contains the area and deposit location known as the Kankar. The nearer the younger deposited the floodplain is called the Khadar. They are renewed almost every year and so the fertile soil ideal for the intensive agriculture. Intensive agriculture. So northern plain on the basis of the river basin divided into the three sections: Punjab plain, Assam plain and northern plain. But the large part of the northern plain are depositional features. Depositional features have formed by old alluvial soil. Old alluvial soil. Okay. If any question, any query, तो बताएं. अगर किसी को कुछ क्वेरी करना है, पूछना है. So on the है ना, एलुवियल सॉइल को जब हम करते हैं तो दो पार्ट में. द सॉइल इज द रीजन कंटेन द कैलकेरियस डिपोजिट, लोकली नोन एज द कंकर कहते हैं. कंकर द नेवर यंगर डिपोजिट of the flood plain is called the khadar. और यही खादर they are the renewed almost the every year flood plain की every year. So now is the known as the Bangar. On the basis of age, these are the new alluvial soil. These soil are fine and fertile and they are found in the lower the reaches of the river valley is known as the Khadars. And Bangar on the basis of age, these are old alluvial. These soil are the coarser and the less fertile than the Khadar soil, and they are found in the upper reach the valley.